Welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. आज start करिबा geography environment रा questions test series जोटा कि हमें relevant questions अच्छी तारा set 3 ठीक है जो part 3 जोटा कि हमें discuss करचे. Okay. So I hope मु देखुची समस्त को observe करूची बहुत जण देखुचंदी भला comment लिखुचंदी और there is also a requirement that ki sir हमको और conceptual clarity दरकार. Definitely ए जिनसो उपरे that is my sole objective of giving such type of questions on your OPSC base रे जोटा कि UPSC format रे होची वर्तमान questions भलानी seeing the very practicalities of the questions that are coming in the successive years say नहीं कि से जिनसो गुडा मो माइंड रखी करा होची. So don't worry for that one. ठीक अछि और भी announcement जछ मु कहबी. So let us proceed. सकाल सकाल टिके पढ़ी देबा भलो से. ओके भलो भलो क्वेश्चंस करबा. प्रथमे फर्स्ट हमें विल गो फॉर दिस फर्स्ट जिबा ज्योग्राफी को जिबा हैला क्वेश्चंस करबा. ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चंस मु कहबी which plate is composed of mainly oceanic crust. First question अछि प्रैक्टिस करबा. Again this question comes from your geomorphology. ठीक अछि physical geography or geomorphology. ठीक है geomorphology. This question comes from your geomorphology a part geomorphology question कौन पता है which came from this Pacific plate, Eurasian plate, Antarctic plate and African plate. का भीतर कौन हबो Pacific, Eurasian, Antarctic और African plate. So answer जदि हम देखो it is none other than Pacific plate. काहे की Pacific plate हबो. Again the questions arises why it is Pacific plate. Pacific plate एथि पई की because Pacific plate रे जदि हमें देखिबा कि Pacific plate is always there is in subduction zone. Pacific plate has always placed on a subduction zone. Placed on a subduction zone. ठीक अछि subduction zone माने गोटे प्लेट आ गोटे प्लेट जोटी ओवरराइड हुए जो जगह ब्रेक करी के हुए से प्लेट ताला subducted plate. एठी एला this one is subducted plate ए जगह our plate override kurche apre. This is an overriding plate. This is plate 1, plate 2. This is your overriding plate. A part hala tamara subduction zone hala and this one is your subducted plate. So Pacific Oceans रे से जिनसरा बहुत होची hala subduction जोटा कि हमें कहूच. Just a second. अच्छा तापरे पुनी तमे नेक्स्ट क्वेश्चन टा पढो. जस्ट 1 सेकंड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पुनी देखिबे कि कैलकुलेट द टाइम एट साओ पोलो लोकेटेड एट 45 degree. A question डाला 45 degree west. If it is 11 PM Saturday at Tehran, then located at 50 degree east. ये बड़ा questions जदि हमें देखिबा कि एटा latitude और longitude रे questions टा आसी. Right? This question comes from your latitude and longitude. हला latitude longitude कोठी latitude longitude is very fundamental part. आउ जदि OCS 21 रो हम questions देखिबा सम latitude longitude गोटे पचार जंती क्वेश्चंस एंड रिगार्डिंग तमरो मैथमेटिकल ऊपर पचार जंती मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऊपर. सो वो जन भावंती नाही करिवा दरकार नहीं बट इट इज वेरी मच नेसेसरी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो केमती रहइबो कैलकुलेट रेडी मु कहूची हैला कि कैलकुलेट जदी हम देखिबा मेटी करि दूची केमती रहइबो. देखो हमें जानि जंती केमती ईस्ट पट को गले इफ यू आर गोइंग टू द ईस्टर्न साइड वी आर गेनिंग टाइम हैला. ईस्ट पट को जदी हम जाउचू आ गोटे वेस्ट पट को खाली एति जानो टाइम गेन ईस्ट पट को गले टाइम गेन करछो आ एठी टाइम लॉस करछो हला लॉस टाइम लॉस होची हला टाइम गेन होची आ एपटे टाइम लॉस होची. तो नॉर्मली हम कोन जानचंती पृथ्वी घुरे केते पृथ्वी 24 घंटा रे हला 360 डिग्री घुरुची खाली एति मन रखो. देन 1 आवर केते बुलुची 15 डिग्री हला 1 आवर 15 डिग्री माने और 15 डिग्री बुलुची 60 मिनिट रे हला 60 मिनिट रे. सो 1 डिग्री बुलिबो केते
1 डिग्री बुलियो मन रख, इट इज वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन 24 घंटा रे 360 डिग्री बुलची भलो भाबरे मन देकी सुनो हैला देन गोटे घंटा रे 15 डिग्री माने गोटे घंटा माने 60 मिनिट ताने 15 डिग्री बुलला 60 मिनिट रे माने प्रति 1 डिग्री से बुलुची 4 मिनिट रे ता माने पृथ्वी गोटे डिग्री बुलिया पे 4 मिनिट समय नु खाली दिस आर द बेसिक्स एटा मन रखो हैला 1 डिग्री बुलिया पे 4 मिनिट समय नु ता माने क्लास जदी घंटा कर होची घंटा कर बेल को पृथ्वी 15 डिग्री बुल जाइथिबो राइट और जदी जदी रहउची 40 मिनिट्स ताले तमर केते रहइबो 40 इनटू ठीक अछि जदी हमें देखिबा 40 मिनिट्स रे ताले केते रहइबो 40 मिनिट्स बाय 10 ताले 10 डिग्री बुल जाइथिबो ठीक अछि अच्छा कोन रहइबो से देइची कि साओ पोलोटा कोठी साओ पोलोटा हला तमरो जदी म कहबी साओ पोलो is in South America, Brazil. This is Sao Paulo. Let's say this is Sao Paulo. This is Sao Paulo. Sao Paulo है Brazil पे. तारा देश के located at 45 degree. 45 degree longitude रे placement अच्छी. Next यदि पचार जे जल्दी रहिला, then what is the Tehran located 50 degree? आउ सेठी Sao Paulo time इची केते ए जगह रे time इची 11 PM 11 टा राती 11 टा शनिवार सैटरडे. ताले से पचार जे तेहरान कोठी तेहरान है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एटा है 0 डिग्री माने जीएमटी लाइन और आईएसटी लाइन जीएमटी और आईएसटी लाइन ए लाइन है जीएमटी लाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी और आईएसटी एटी जोटा लंदन दिख क्रॉस करछि दिस इज लंदन तो तेहरान पचार से ईरान रो कैपिटल तेहरान इज हियर तेहरान को से पचार से तेहरान रो 52 डिग्री अछि तेहरान रे सेठी टाइम टा केते एटी लॉन्गिट्यूड केते 52 डिग्री सो हमें जानि जंदी टोटल लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस केते टोटल longitude distance केते longitude distance हम केते जाने दी टांग को मिसै दो माने this is x हैला and x1 आउ x2 मिसै दो केते ला longitude total तान केते रहला 45 रु 0 पुनी 0 रु 52 so 45 plus 52 तान केते ला 97 डिग्री हमें जानले 97 डिग्री ता माने साओ पोलो और तेहरान भीतर the distance is 97 डिग्री longitudinally so longitudinal जदी 97 डिग्री हला ताले केते मिनिट हबो गोटे डिग्री हम जानि छ 4 मिनिट so 97 into 4 is equal to केते हला 360 7 4 जा 28 388 मिनिट ता माने तेहरान द कैपिटल ऑफ ईरान एंड द साओ पोलो ब्राजील रे गोटे वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी स्टील सिटी ता भीतर डिस्टेंस जदी हम देखबा टाइम रो 388 मिनिट माने 6 घंटा 28 मिनिट ता माने पछुआ अछि के साओ पोलो वर्तमान देखिबा कोन तेहरान रे साओ पोलो रे टाइम इछि केते टाइम साओ पोलो लोकेटेड 45 डिग्री वेस्ट इट इज 11 PM सैटरडे सेठी अछि ठीक अछि 11 PM सैटरडे राती 11टा बाजछि एठी ता माने 6 घंटा आगु माने केते रहइबो जदी हम देखिबा 6 घंटा माने एठी हम देखिबा 6 घंटा 11 PM सैटरडे ता माने 6 घंटा आगु माने देखो केते रहउची माने ईस्ट गले तुम टाइम गेन करूछो ता माने तेहरान टाइम केते 6 घंटा 12 टा रु तमे 11 टा रु 6 घंटा आगु नबो ताले कोन हो निश्चय सकाळ 5 टा हबो हैला सकाळ 5 टा पुनी देछि तमर केते 28 मिनिट ठीक अछि ओके तो एठी देछि केते 52 डिग्री 428 न 360 प्लस 28 388 28 मिनिट तो रहिबो केते एठी साओ पोलो लोकेटेड 11 PM सैटरडे देन तेहरान लोकेटेड एट द 52 डिग्री ताले कैलकुलेट द टाइम एट साओ पोलो एट 45 डिग्री इफ इट इज 11 PM सैटरडे मो एठी गोटे जिंस जस्ट खाली उल्टा लिखि दु शेयर कोछि उल्टा कोन लिखि जस्ट आई एम सॉरी एठी लिखिले केते खाली सब ठीक अछि तेहरान रे टाइम टा देछि से तमरो 11 PM सैटरडे हैला राती 11टा बजे शनिवार कोठी तेहरान रे तो साओ पोलो रे में कोन हैला जदी राती 11टा सब ठीक अछि खाली इतिक जानो तमरो 388 मिनिट हैला 388 मिनिट माने के तेहरान और साओ पोलो भीतर माने ताका टाइम रो माने डिस्टेंस टा हैला टाइम लैग टा तेहरान जति राती 11टा बजे ताने साओ पोलो रे से टाइम टा पचाछि व्हाट इज द टाइम एट साओ पोलो ता माने निश्चित रूपे साओ पोलो 11टा जति एठी बाछि निश्चित रूपे सेति की समय पछुआ थिबो कोठु तेहरान रु हला पछुआ थियो काहे कि ना तमे वेस्ट पट को आसले टाइम लॉस होची दैट इज अ लॉस ऑफ टाइम सो राती 11 रु 5 घंटा ए सॉरी 6 घंटा तमे फेड 6 घंटा केते 6 घंटा 28 मिनिट फेड पछु ताले केते हो आंसर इट इज नन अदर देन जदी हम देखिबा 4टा 32 PM सैटरडे तमे निजे देखो
चारि चारटा बची 6 घंटा ऐड कर केते रहला 6 घंटा ऐड कर राति 10टा बजला प्लस 32 मिनिट आउ 28 जोड़ 60 हे गेला राति 11टा त माने आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे राइट आई होप इट इज क्लियर ठीक अछि ओके आगु पुनी एबडा आउरी करेबी ठीक अछि बेसिंग ऑन द डिमांड ठीक अछि सो दिस इज द मन रखो खाली एतिकी ए कैलकुलेशन हला मेन 324 घंटा 360 डिग्री गोटे घंटा रे 15 डिग्री बुलची और 15 डिग्री की 60 मिनिट यदि होची गोटे डिग्री की 4 मिनिट दिस इज द बेसिक्स फंडामेंटल ओके आगु बढ़िबा पुनी थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्टेड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो हैला कोड गिवन बिलो फर्स्ट थिंग the primary seismic waves are analogous to the sound waves हैला analogous माने ता संगरे समान analogous माने it is most of the synonyms ठीक अछि प्राइमरी सेस्मिक वेव्स माने केटा p waves हम जानि छथि p waves हैला p waves प्राइमरी को p waves को earthquake waves seismic waves primary seismic waves sound waves संगरे सेटा analogous अछि ओके एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल करेक्ट हैला the primary waves can travel through the solid liquid and gaseous medium बिल्कुल हम जानि छथि p wave द ट्रैवल करे दिस इज द p wave एटा हम जानि छथि p wave टा ट्रैवल करे दिस इज योर कोर this is your mantle and this is your crust so it जदी तमरो प्लेट टा ब्रेक हैला this is your epic let's say focus तो एटा हैला focus let's say focus it तो प्राइमरी वेव्स टा धीरे धीरे एमती पूरा इनके ब्रेक करके जीवो प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल योर सॉलिड लिक्विड एंड गैस दिस इज योर p waves हैला path of p waves path molecule p waves path this is p waves path right solid liquid tinta medium re kare this is absolutely correct next the speed of the primary waves is more in the sedimentary rocks than in the granite and basalt हैला speed of the जदी देखिबा speed of the तारा more in the granite and basalt एठी wrong हे this one is wrong हैला एटा just उल्टा हे गेला मन रखो primary waves रो speed ता sedimentary rock रे less than your granite or basalt माने solid रे ठीक अछि solid surface रे कोन लिखबी the speed of primary waves हैला p waves is more or high in solid surface solid and rigid surface मतलब solid and rigid surface solid और rigid surface रे अधिका solid and rigid surface रे than your sedimentary rocks that is why it is bhul hegla so answer kono 112 mean answer is a for agra hope it is clear to everyone right very basics I am जो थिक तमे कहउछो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग conceptual एडा सब हला एही सोडिया क्वेश्चन से फॉर्मेट से मन देखो तमर पचारचुंदी ओपीएससी रे ठीक अछि यूपीएससी रे क्वेश्चंस बहुत सारा मेजरली कांसेप्ट पर फोकस कर बिकॉज़ नाउ वर्तमान जो बड़ा this era is going on we cannot expect the very direct easy questions from your in prelims where prelims try cutthroat competition now rejection round hela we have to accept it next okay jaha kichi करछ न बुझी परछ you can comment on that part hela सब मन को खाली पढी गले बेसी होबन आंसर तमे केमती क्वेश्चन को सॉल्व करछ that should be the primary objective right fourth question a meteor हैला कॉस्मोलॉजी रो पचारछि कॉस्मोलॉजी यूपीएससी पचारछन सो नथिंग हैला निश्चित रूप एटा बहुत माने हमें केबे भी कोनोसी जिंस को नेग्लेक्ट करबन क्वेश्चंस को देखि कि ता अनुसार हमें हमरो चेंज करबा ठीक अछि माने पढार स्टाइल ता meteor is a rapidly moving star a piece of matter which has entered the earth atmosphere from the outer space part of the constellations and comet without tail बहुत सारा लागु बहुत सारा क्लोज ऑप्शंस ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है ये भी हो सकता है these are the things we can say that कि this can be done आ भितरु कोडा accurate answer कोडा हला 100% that is the B for Bombay is the absolutely correct answers where you find piece of matter which has entered the earth surface atmosphere from the outer space that is called your comet जोटा कि हमें देखु हला धूमकेतु जोटा को ठीक अछि NCERT पढ़िबो NCERT अगर आप लोग देख ले तो it will be more easier right next fifth which one of the following countries is the largest producer of fuel wood in the world fuel wood माने पचारछि fuel wood माने को fuel wood इंडोनेशिया रशिया इंडिया एंड चाइना fuel wood माने कहे मन रख टाइगा बायोम कथा से कहछि हला टाइगा फॉरेस्ट
टाइगा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट ताको कहा जाए टाइगा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जोटा कि हमें जानि छथि रशिया हला ए भितरे सबुटु लार्ज वन रशिया हला सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे टाइगा फॉरेस्ट सबुटु अधिक रशिया देन कनाडा इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच दैट कंटिन्यूज फ्रॉम योर वेस्टर्न पार्ट कनाडा रो अलास्का पाखरु टिल नेकी जदि हमें देखिबा कामचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया बहुत बड़ गोटे लंबा स्ट्रेच तमर जाईछि हला दैट इज आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट द टर्म wind gap is associated with wind gap काको कहि परिबा the term wind gap is associated with glaciers fluvial actions underground water and wind actions का भीतर हम करि परिबा wind gap का wind gap yes समस्त आंसर बहुत जण देखु जो आंसर दियो किछि किछि नो नीड टू फील हेजिटेट ऑन दैट वन हैना भूल हो ठीक हो यू कैन पार्टिसिपेट अच्छा जदि हमें देखिबा आंसर सा भीतर wind gap रे ताले योर आंसर इज योर दैट इज जदि देखिबा इट इज योर fluvial action 6 is B for Bombay fluvial action this is correct fluvial माने कोन एटी आंसर देली मु B for Bombay this one fluvial action माने this is your river water मन रखो रिवर वाटर को भी फ्लूवियल कहा जाए विंड गैप हैला विंड गैप फ्लूवियल एक्शंस इज योर विंड गैप ठीक अछि जस्ट a just a minute one queries has came अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द टर्म रिया रिया पचरछि कोठी द टर्म रिया रेफर टू हैला टर्म रिया रेफर स्टैंड्स फॉर व्हाट रिया इट सीम्स को जगह रे टर्म रिया जदि देखिबा ए सबमर्ज रिवर वैली एंड एमर्ज रिवर वैली एंड सबमर्ज ग्लेशियल वैली एंड एमर्ज गैसियस वैली ग्लेशियल वैली रिया ए क्वेश्चंस ऑलरेडी आसी सरछि मन रखो एनसीईआरटी जदि पुराना एनसीईआरटी देखियो इवन इफ सेथरे बेसिक क्लैरिटी अछि रिया इज बेसिकली एन सबमर्ज रिवर वैली इफ यू गो टू द रिया तमे जदि जिवो यूरोप रे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ खास करके यूरोप रे यूके कथा हम कहबे हला सबमर्ज रिवर वैली मेनली फाइंड इवन इफ यू गो फाइंड इन द फ्रांस रे भी से पड़ भी देखियो हला रिया वैली दिस इज मन रखो खाली सबमर्ज रिवर वैली ठीक अछि दिस इज रिया कोस्ट एनसीईआरटी फॉलो करियो दिस इज वे क्लैरिटी अछि बहुत जगह रे केमति रिवर वैली हला सबमर्ज्ड हे समटाइम्स ठीक अछि रिया अब खास करी यूरोपियन कंट्री रे एटा एरिया कोस्ट बेसी देखा जाय क्वेश्चन नंबर 8 द एनुअल रेंज टेंपरेचर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनुअल रेंज टेंपरेचर जदि हम देखियो एनुअल रेंज टेंपरेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट इज हाई एज कंपेयर्ड टू द कोस्टल एरियाज बहुत बढ़िया क्वेश्चन से क्वेश्चन कौन पचला कि एनुअल रेंज ऑफ टेंपरेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट रो इंटीरियर रे इज हाई एज कंपेयर्ड टू कोस्टल एरियाज माने कोस्टल एरिया अपेक्षा हला इंटीरियर कंटिनेंट इंटीरियर रे सब बड़े काहे की अधिक टेंपरेचर था व्हाई मो क्वेश्चन चला व्हाई देयर इज ए अधिक टेंपरेचर था व्हाई देयर इज एन एनुअल रेंज टेंपरेचर इज ऑलवेज हाई कौन पई था तो रीजंस प्रथम देखिबा द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर है थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर प्रथम क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट काहे लैंड ता हीट हुए कंडक्शन रे हैला बहुत जल्दी हीट हो माने रैपिड हीटिंग रैपिड कूलिंग वेयर एज वाटर ता कन्वेक्शनल प्रोसेस रे कन्वेक्शन हैला सॉलिड बॉडी माने सॉलिड और लैंड सरफेस थ्रू द हीटिंग मीडियम कोन हैला कंडक्शन ठीक अछि कंडक्शन प्रोसेस रे वाटर हैला वाटर और लिक्विड both गरम हुए हीटिंग मीडियम कन्वेक्शन दिस इज योर कन्वेक्शन दिस इज योर कन्वेक्शन एटा गोटे कंडक्शन आ गोटे कन्वेक्शन हीटिंग मीडियम लिखली कौन
हिटिंग मीडियम हैला हिटिंग मीडियम ठीक अछि माने रैपिड कूलिंग एटे हला स्लो हिटिंग स्लो कूलिंग एटा रैपिड हिटिंग रैपिड कूलिंग सो ऑब्वियसली थर्मल डिफरेंस बिल्कुल रहे सेकंड वेरिएशन इन द अल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस बिल्कुल जोड़ा कहली ए कॉन्टिनेंट्स और ओशियन जो ए रीजन जो सॉलिड और लिक्विड जो ए दिका मेन हैला दिस इज द क्लू ए थ्रू एटा मन रखो दिस इज द फार्मूला बस दिस इज आल्सो करेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड्स इन द इंटीरियर डजंट मैटर एटी एटा को किछि फरक पकाइनी नेक्स्ट हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर्ड टू द कोस्ट दैट बिल्कुल नो सो 3 4 गलत हम एलिमिनेट कले 3 4 3 4 एटी आंसर पूरा सबु जदि हम सी डी माइनस करछन ए और बी भितर बी इज द करेक्ट आंसर मन रखो एई बडा क्वेश्चंस रे टिके देखि जाई करिवो इट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू आउट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट नेक्स्ट हैला क्वेश्चन नंबर 9 okay very good ranjit answer dela a ranjit answer dela a no ranjit it's not a it b भी हबो a भी तमरा correct नहीं 1 भी अच्छी खाली option 1 no 2 भी हबो I hope it is clear now ranjit okay very good next which of the following statements regarding laterite soils of India are correct laterite soil which of the following laterite soil की correct they are generally red in color बिल्कुल they are generally red in color बिल्कुल हैला laterite soil ते कोन पे regarding laterite soil माने इथरे because of presence of iron ठीक अछि because of iron fe माने iron because of iron जेतो अलगा था iron का कलर तला तमर कोन red color so this is correct next they are rich in nitrogen and potash बिल्कुल भूल नाइट्रोजन लैटराइट सॉइल माने नाइट्रोजनली हाईली डेफिशिएंट नाइट्रोजन माने एनपीके जोटा एन आ पोटाश हला के एला रिच नो दे आर ओके दे आर पुअर इन एटा रिच नो दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटाश ठीक उल्टाटा लिखितला बिल्कुल भी नो हला नेक्स्ट दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी बिल्कुल नो हला राजस्थान यूपी से डेवलप नो लैटराइट सॉइल कोठी हुए जो जगह रे तमरो बहुत मात्रा रे तमरो वर्षा हुए ह्यूमिडिटी हुए हॉट ह्यूमिड हैला ह्यूमिड का रेनफॉल सेही जगह रे एटा उल्टा है औ पोटाश जो कोच रिच इन नाइट्रोजन कोन पे हुए बिकॉज़ ऑफ लीचिंग एते वर्षा हुए बिकॉज़ ऑफ हेवी रेनफॉल बट लिखली बिकॉज़ ऑफ हेवी रेनफॉल लीचिंग प्रोसेस LEACHING लीचिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस हैला लीचिंग प्रोसेस टेक्स place and they kon karanti they remove top surface mineral they remove minerals from top surface from the top layer of soil मन रखो ए जगु कोन रे धोई हे जाय सब मिनरल गुडा कमी जाय बहुत भला भाबे मन रख वेरी बेसिक जिंसडा कहूची कोन पाई खाली घोषिक मन रखले हबनी काहे की नाइट्रोजन और पोटाश सेठी कमे नाइट्रोजन पोटाश एथि पई कमे because of these two things because of leaching process मन रखो leaching is an phenomena जो जगु तमर कोन हुए it removes the minerals from the top layer of the soil that is what happened हैला 8 सेकंड नंबर टा मु देली और राजस्थान हरियाणा तो बिल्कुल भी वर्षा ही सेठी बहुत कम हुए सो दुईटा जंक रॉन्ग हैला दुईटा जंक रॉन्ग then tapioca and cashew nuts grow well in these soils absolutely correct tapioca and cashew nuts बहुत बढ़िया हुए जेंति हमर नयागढ़ जीवो भुवनेश्वर खोरदा आड़े खोरदा डिस्ट्रिक्ट नयागढ़ रे बहुत भला because of the presence of the laterite soil that is why it is correct 1 and 4 so answer of C हैला C for Cuttack okay ठीक अछि this is very good Ranjit very nice बहुत बढ़िया रंजित आंसर दोछो very nice this C is the correct answer hope it is clear now okay ठीक अछि ए टाइप रे सब कर क्वेश्चन दिस विल फंडामेंटल बहुत क्लियर हबो बहुत बढ़िया भी हबो नेक्स्ट हमें जीवा नोटा क्वेश्चन सरला ज्योग्राफी रे हम कहिथे नोटा एबे एनवायरनमेंट रे किछि क्वेश्चंस करबा दिस इज आल्सो जेमते हमर जो भी रिचुअल हमें मेंटेन करूछु गोटे रिचुअल्स गोटे मेंटेन करूछु नाही कांसेप्ट्स काटी पे किछि ज्योग्राफी किछि एनवायरनमेंट सेमती हैला एनवायरनमेंट क्वेश्चन करबा प्रथम क्वेश्चन देखो बक्सा टाइगर रिजर्व
Buxa Tiger Reserve recently in the news is located in which state? Buxa Tiger Reserve. Make it. बोला बे को बक्सा टाइगर रिजर्व को जगह किए कहि परिवो रंजित वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश बिहार मेघालय बक्सा टाइगर रिजर्व मन रख एनवायरमेंट क्वेश्चन तो एथरा देखु तो केमती से माने बहुत वेरी लार्ज स्केल रे से माने जिंस गुडा करूचंती एंड वन हैज गोटे कैंडिडेट को जानिबा बहुत जरूरी है जिंसटा बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश बिहार और मेघालय को जगह रे हबो अच्छा आंसर जदि मु कहबी इट इज यस एनीवन समस्त आंसर दे परिवो यस रंजित आंसर जदि हम देखिबा बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल बक्सा हैला बहुत जण लागुथो कि नो बक्सा माने प्राय समस्त भाबुथो कि आइदर बिहार हितो नले आंध्र प्रदेश हितो हैला मोस्टली बिहार नो इट्स नॉट इन बिहार बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल देखिबो सिक्किम पाखा पाखी रंजित लिखला सर ए और सी भीतर कंफ्यूजन यस यस आई अंडरस्टैंड दैट इज आई टोल्ड कि बिहार भोजन भावुथो सो आंसर इज योर करेक्ट बहुत बड़े रंजित वेरी नाइस बहुत बड़े आंसर दोछ इट इज वेस्ट बंगाल हैला बक्सा टाइगर रिजर्व ए बडा समर मन रख नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व आउ तमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एगुडा सब क्वेश्चंस माने वेरी फ्रीक्वेंटली पकोचन राइट नेक्स्ट which of the following national parks is not a UNESCO heritage world heritage site या भितरु किया भितरु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नुह ए बी सी एंड डी किए नुह भितरु काजीरंगा देन केओलाडो सुंदरबंस एंड कान्हा किया भितरु इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नुह भितरु काजीरंगा मु कहि दोची काजीरंगा इज इन आसाम केओलाडो घाना इज इन राजस्थान सुंदरबंस वेस्ट बंगाल then Kanha Madhya Pradesh किया भितर who can say Ranjit answer dala sir it is D okay D yes D is the correct answer Kanha hala Madhya Pradesh re मन रखो it is basically tiger reserve Kanha tiger reserve re it is not a UNESCO world heritage site आपको दिया है नहीं मान्यता मिली नहीं very good Ranjit next third question International Biodiversity Day is celebrated on कोई केबे होची की कहि परियो International Biodiversity Day right International Biodiversity Day 22nd March 22nd April 22nd May then 22nd June केबे होची International Biodiversity Day we know that one biodiversity day सबटु बहुत बड़ important biodiversity yes जदी हम देखिबा आंसर 22nd March, April, May, June. Answer is your C. C is the correct answer, right? C is the correct answer, right? जो तरह की International Biodiversity Day इतने celebrate करा होच. Okay. Next, the Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary. मन रखा. The Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary is located in which state? को state रे? Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary. की कहि परियो? उत्तराखंड बड़ी बनी दूची उत्तराखंड तमिलनाडु गुजरात देन योर छत्तीसगढ़ ग्रिजल्ड स्क्विरल को जगह रे बेटर जो आंसर रंजित दोछ ताले तमे कहि परिबो एमती 4 हला जेमती लिखलो 3C की 4A की 2B एवडा लिखले मु जानि परिबो कोटा हला सा रंजित ताले तमे आंसर दोछ C गुजरात आंसर जदि हम देखिबा No, it is not Gujarat. It is neither Chhattisgarh nor Gujarat. It is nor Uttarakhand. Answer is your. It is Tamil Nadu. Right? Answer is your Tamil Nadu. B for Bombay. A, C, D. No, it is B for Bombay. Tamil Nadu is the correct answer. Tamil Nadu is the correct answer. Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary. Hello, Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary. It is in Tamil Nadu. Hello, please make a note of this. Tamil Nadu rate range. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे नेक्स्ट करो आ गोटे बढ़िया क्वेश्चन ड्यू टू improper or discriminate disposal of old and used computers of their parts हला क्वेश्चन टा भलो भाबे सुनो बढ़िया क्वेश्चन टा ओके वेरी गुड रंजित ड्यू टू improper or indiscriminate disposal माने जो कंप्यूटर हम फोपाड़ी दउछु disposal old and used computers हम जो कंप्यूटर में old और used computers or their spare parts तार जो parts भी हम जो फोपाड़ी दउछु dispose करूछु which of the following are released into the environment as e-waste
ताने आमे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट घरे बाहर छ आमे नै कोनटा को डिस्पोज करछु देई दोछु ता भितरु कोनटा बाहर छी ई वेस्ट हैला व्हिच आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बेरिलियम कैडमियम क्रोमियम हेप्टाक्लोर मर्करी लेड प्लूटोनियम माने कैन यू सी द केते डेंजरस सब हमें देखा हमें कि हमर एक्टिविटी देख सी जो स्टे इलेक्ट्रॉनिक्स जिंस केते कम वर्तमान द लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चली पड़बे फोन नहीं तो लाइफ नहीं इंटरनेट नहीं तो लाइफ नहीं बट ता भितर वी शुड मेक ए स्टेप स्टे अवे केमते रहइबो हला 1 3 4 6 7 माने बेरिलियम देन क्रोमियम देन हेप्टाक्लोर then lead and plutonium then 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 इतरे 4 और 7 नहीं माने हेप्टाक्लोर और प्लूटोनियम नहीं then 2 4 5 7 2 4 5 7 माने कैडमियम मर्करी एंड प्लूटोनियम नेक्स्ट डी रे 1 2 3 4 5 6 माने सब आंसर रंजित कोन देला 5b रंजित आंसर दोची 5b लेट मी गो फॉर द आंसर 5b रंजित has chosen as 5b is the correct answer हला 1 2 3 5 6 आ भितर जदि हम देखिबा बेरिलियम एब्सोल्युटली वेरी डेंजरस जोड़ा कि हमर डैमेज कर इंटरनल ऑर्गन को हला खास करके लंग्स आउ ये को बेरिलियम इट इज करेक्ट कैडमियम बिल्कुल करेक्ट कैंसर कॉज करे कैडमियम क्रोमियम बिल्कुल क्रोमियम हमर हला क्रोमियम कोन करे हमर लंग्स को भी अफेक्ट पकाए हला आंसर दिस वन इज आल्सो करेक्ट हेप्टाक्लोर नुहो हेप्टाक्लोर इज ए पेस्टिसाइड फॉर योर इंफॉर्मेशन हला पेस्टिसाइड्स तो इट फोरटा रॉन्ग हैला ए भीतर देखो एलिमिनेट केमती करबे हेप्टाक्लोर कोन हैला हेप्टाक्लोर इज ए पेस्टिसाइड दिस इज ए पेस्टिसाइड हैला पेस्टिसाइड सो एटा को हैला तो कंप्यूटर रे एटा न थाए कंप्यूटर रे पेस्टिसाइड ता काई दिया बुझियोची तो हेप्टाक्लोर 4 माइनस कलो ते पचास या भीतर कोटा रिलीज हुए तो एटा तो नाही 4 जमने जोटी ऑप्शन अछि सेटा को तमे माइनस कलो 489 489 489 एठु जाना पड़ गेला आंसर बी फॉर बॉम्बे आंसर मोटे काहे कहूची कि तमे परीक्षा रे एलिमिनेशन मेथड सबले जाओ यू विल गेट द आंसर चाहे से ओपीएससी हो यूपीएससी हो वेरी क्लियरली मैं चरा कहूची हैला मर्करी बिल्कुल भी अच्छी लेड बिल्कुल अच्छी प्लूटोनियम नहीं प्लूटोनियम इज ए कौन रेयर अर्थ मिनरल दिस इज रेयर अर्थ ठीक है रेयर अर्थ मिनरल ठीक है रेयर अर्थ मिनरल एटा हबन हैला से तो यूरेनियम बढ़िया प्लूटोनियम सो आंसर 4 आउट 7 गलत सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे आई होप इट इज क्लियर सब बेले पढ़िला बेले गोटे जिन मार्क करथुबो कि तमे केमती क्वेश्चन टा केमती सॉल्व करे बहुत जण कोन कोन क्वेश्चन को क्वेश्चन करंती जुक्ति करंती पूरा भूल करी आस सो दिस इज नॉट अ रिसर्च पेपर so your main objective is to clear the exam and you should know the tricks that is what hala bar bar college insura clarity as well okay very nice 5b for Bombay very good Ranjit next dekhiwa 6 number which one of the following terms describe not only physical space hala question suno not only physical space occupied by the organism but also its functional role in the community of organism question kon dela which one of the following terms a bhitor ko term ta hala describes not only kebala mane not only the physical space kebala physical space doji ta no was also occupied by an organism what organism to occupied mane organism also occupied that place but also its functional role in the community ecotone ecological niche hala etu mu kochi ecotone ecological niche then habitat then home range habitat and home range kon right answer Ranjit कहला sir answer is B for Bombay okay anyone else okay हला सुनो ecotone जदि हम कहबे it's a transitional point between transitional zone of the habitat जेमति मु कहबे कि let's say ecotone जदि कहबे कि भीतर कनिका एरिया हला स्वाम्पी एरिया दलदलिया ना लैंड ना पूरा लैंड रे ना पूरा स्थल भाग रे ना जल भाग ना पूरा एक्वेटिक रे दैट इज कॉल्ड स्वाम्पी एरिया दैट इज कॉल्ड इकोटोन फॉर एग्जांपल लेट्स से हैला देन habitat is a particular place where द species live ता घर सिटी home range माने they can be go for ranging they can be imagine to go be migratory bird जेमते migratory bird कथा कहबी that is a home range in the winter time to reduce the effect of the chilling winter they came from far Siberia to chilka pale asଛନ୍ତି ki amar India ko pale asଛନ୍ତି right but when during the summer month re samane puni seti back kari janti so that is their home range
So भितर आंसर कोटा जदि हम देखिबा आंसर इज योर 6B फॉर बॉम्बे इकोलॉजिकल निच मन रख एनवायरनमेंट रे एई भलिया क्वेश्चन देखा एथर का ओपीएससी रे वर्तमान दिस टाइम ओपीएससी तमरो 24 प्रीलिम्स रे हला दिस ईयर प्रीलिम्स रे एई क्वेश्चन भलिया पकैछन ठीक अछि प्रीलिम्स रे एई क्वेश्चन पकैछन एई क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जदि हम कहबे एई जो टाइप रो दिस टाइप हला this type of question hello is very fundamental hello fundamental in understanding in environment ecology environment and ecology these are the very fundamental very fundamental ए type of questions बहुत जन कहते नाइ म एटा पढ़ले किछ हबनी हमर एथरे आसीबनी नो तुमको पढ़िया को पड़िबो यू हैव नो अदर ऑप्शंस फॉर दैट वन पढ़िया को जिंसरा पड़िबो दिस very requirement of this one okay so I hope एटा क्लियर एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क ठीक अछि ता पूर्व मु कहबे एटा कलिया पूर्व हला एट भले तो क्वेश्चन एनी क्वेश्चंस मते पचारि परिबो एबे भी जोटा अछि ता पूर्व मु ता परे अनाउंसमेंट हम कहबी कि जनरल स्टडीज रो जो हमरो मॉक टेस्ट सीरीज और डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हे येछि हला पिला 2 November only 2 weeks egland hela more than 10 days mane near about 2 weeks egland those who want to prelims march you can enroll okay also general studies batches also started also jodi hum kahibi ki geography optionals also UPSC jota ki morning batch ro cheta also started also online batch ta bhi is going to start and this okay in this way next देखिबे टेस्ट सीरीज रो भी एथरा भी स्टार्ट हेछि प्लस ज्योग्राफी रो जदि बैचेस कहबे कि बोथ यूपीएससी एंड ओपीएससी पे ऑलरेडी स्टार्टेड इन आवर ओडिशा सिविल्स ऑलरेडी आरंभ हेछि दोज हु वांट टू एनरोल लेट मी नो दैट वन दोज जो मानकर देखो सब बड़ जिंस हला कि हमर ऑब्जेक्टिव कोन हैला क्वालिटी स्टडी करिवे एंड वी हैव टू नो एते सारा जिंस अछि सब तो पढिया दरकार नै किछि तो हमें पढिबा हैला तो सेही जो जिंसटा हमें करबा सेटा को केमति भाबरे पढिबा दैट इज मोर इंपोर्टेंट how to study what not to study is more important rather than biting around the bush okay so thank you all of you I hope this sessions is makes some clarity and broaden your views anything anyone want to anything to ask please let me know kichi pachari paribo samaste okay anything you can ask okay ठीक अछि so I hope question session समस्त को भल लागि थिवो again batches already हेछि I have said okay civils ro ala both general studies और optionals में already have started right those who want to communicate तमे करि परिबो you can communicate with me हला कोथरे करि परिबो this is the my number 7978090972 this is my contact number right this is my contact number you both can contact also WhatsApp hela e dita right also WhatsApp okay ठीक अछि thank you so much thank you everyone रंजित पचाची क्लास केते बळे स्टार्ट हुए डेली बिल्कुल क्लास रो प्राय तो मॉर्निंग टाइम रे रहे हला आ ए जो क्लास तुम पचारछु ए क्लास ता मोर रेज्यूम हुए जदि हम देखबा कि क्लास ता रेज्यूम हुए वीकली मु ट्वाइस करे जोटा कि तमरो क्वेश्चंस आंसर रहबो आ दी थर रहबो आ प्लस तमरो रहबो हमर सब्जेक्ट ओरिएंटेड नै क्लास जोटा हमर मुची जीएस क्लास ता इवनिंग रे हुए मु रखे आ मॉर्निंग टाइम रे तमरो ऑप्शनल क्लास ता ओके एनीथिंग एल्स टू आस्क रंजित ओके ठीक अछि ताले आज पे एति के विल मीट अगेन थैंक यू सो मच thank you okay anything else to ask we can ask okay or text me jaha bhi kichi queries achi you can text in the chat box also it will definitely will respond for that one okay thank you so much have a good day thank you bye bye take care thank you so much thank you